Maybe because I come from a family where there's sports and athletes in the family. For me, my education was about confidence, about learning how to conduct myself in a gathering, meeting people from different cultures. So, and when people have you as an Indian student, they all expect you to make amazing food, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था. तो थोड़ा मैंने सीखा. So I feel that people are sending their children and investing in their children's education in a place like New Zealand. और जो लोग कहते हैं ना, history is a dead subject about people who died a long time ago, she made that subject come alive. Exercising are really fundamentals that everyone should be doing. Hi, this is Soha Ali Khan and you're watching me on FilmiBeat. हेलो एवरीवन, मैं हूं सरवीरन सिंह और सभी का वेलकम है फिल्मी बीट में. न्यूजीलैंड एजुकेशन के साथ एसोसिएटेड हैं सोहा अली खान. सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में. Thank you so much, Subi. ओके, सो न्यूजीलैंड एजुकेशन के बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इनिशिएटिव वो इंडिया के लिए लेने वाले हैं. एजुकेशन न्यूजीलैंड एक्चुअली दिल्ली जा चुके हैं, चेन्नई जा चुके हैं, अभी मुंबई में आए हैं क्योंकि उनके बॉर्डर्स फिर से खुल चुके हैं कोविड के बाद. और वो इनकरेज करना चाहते हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं टू थिंक अबाउट न्यूजीलैंड एज अ प्लेस टू स्टडी फॉर देयर यूनिवर्सिटी. और मैं बहुत ही खुश हूँ कि उन्होंने मुझे चुना है एज अ ब्रांड एडवोकेट फॉर इंडिया फॉर न्यूजीलैंड एजुकेशन, क्योंकि एक बहुत ही सबसे पहले खूबसूरत जगह है. आई रियली थिंक न्यूजीलैंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस इन द वर्ल्ड. और 8 यूनिवर्सिटीज़ हैं सिर्फ न्यूजीलैंड में, लेकिन सारे 8 दुनिया के टॉप 3% की यूनिवर्सिटीज़ में है. सो द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी हाई. बहुत ही एक इंक्लूसिव डाइवर्स जगह है, जहाँ पे इंडिया में भी बहुत डाइवर्सिटी है, बहुत सारे कल्चर्स हैं. वहाँ पे बहुत आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं. जब आप घर से दूर जा रहे हैं, यू फील अ लिटिल नर्वस, यू फील अ लिटिल कि व्हाट विल द कल्चर बी लाइक, बट इट्स अ प्लेस वेयर यू फील सेफ, वेयर यू फील यू कैन मेक फ्रेंड्स, पीपल रिस्पेक्ट यू. एंड इफ़ यू लाइक द आउटडोर्स, इफ़ यू लाइक बीइंग in the countryside, if you like skydiving or trekking or hot springs and just being surrounded by natural beauty, then New Zealand is the only place really to be. सो इतनी सारी चीज़ें जो आपने बताई कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में अगर एजुकेशन लेते हैं इंडियन स्टूडेंट्स तो कितना कुछ चेंज आएगा. आपको क्या लगता है कि जो पेरेंट्स हैं यहाँ के, उनको अभी भी ऐसा लगता है कि बच्चे को भेजना चाहिए या नहीं भेजना चाहिए, उनके लिए आप क्या कहना चाहिए? मैं एक्चुअली अभी एक मीडिया रिप्रेजेंटेटिव थे यहाँ पे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, और उन्होंने बोला इंटरव्यू के बाद कि मेरा बेटा अभी पायलट बन चुका है एंड ही वेंट टू न्यूजीलैंड टू स्टडी. तो आई फील दैट पीपल आर सेंडिंग देयर चिल्ड्रन एंड इन्वेस्टिंग इन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन इन अ प्लेस लाइक न्यूजीलैंड. क्योंकि आप क्या चाहते हैं कि सबसे पहले द एजुकेशन शुड बी हाई क्वालिटी. अगर आप पैसे खर्च करने वाले हैं अपने बेटे या बेटी को दूर भेजने वाले हैं, तो यू वांट देम टू गेट अ गुड एजुकेशन. दैट यू आर डेफिनेटली गेटिंग इन न्यूजीलैंड. लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अमंग द टॉप 3% इन द वर्ल्ड. देन इट्स अ सेफ प्लेस टू स्टडी because we worry about our children also. So you want them to be in a safe environment. So there's safety, there's inclusion, there's diversity where people see people from all over the world, they're accepting of them and they are welcoming of them and they are learning from them. So that kind of richness of culture, if you see behind me also, they've got their Maori culture in New Zealand, and this is the traditional hongi greeting, which is how people meet, and you can see that there's a lot of warmth, there's a lot of parts of your there's physical proximity or touching. There's a sense of welcoming. एजुकेशन के अलावा भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो आपने मेंशन की, वो सब कितने इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, स्पेशली जब वो बाहर जाके पढ़ते हैं. बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती है, तो कितना इंपॉर्टेंट है वो सब? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली क्योंकि अभी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि जो आपने किताब में पढ़ लिया या एग्ज़ाम में आपने जो लिख लिया, जो आपने सीखा भी फ्रॉम एन एकेडमिक परस्पेक्टिव. फॉर मी, माई एजुकेशन वॉज अबाउट कॉन्फिडेंस, अबाउट लर्निंग हाउ टू कंडक्ट माई सेल्फ इन अ गैदरिंग, मीटिंग पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, representing my own country, because when you study abroad, people ask you lots of questions about India. And so you learn so much about your own culture. Then you learn about another culture. So you become a richer person at the end of it. For me, again, education was not just history books. It was about learning how to use, how to manage a bank account, how to manage finances, how to catch a bus, use public transport, how to use a washing machine, how to learn how to cook, because you have to cook for yourself as well. As a student, you're on a budget and you can't just eat out all the time. So, and when people have you as an Indian student, they all expect you to make amazing food, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता था. तो थोड़ा मैंने सीखा, कुछ नहीं सीखा. But these are all parts of like your education that go around to making you into a well-rounded individual. और ये सवाल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी बिकॉज ऑडियंस ज़रूर जानना चाहेगी कि जब आप स्टूडेंट थे, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था या कौन सी फेवरेट एक्टिविटी आपकी हुआ करती थी?
My favorite subject has always been history because of Mrs. Uppal, जो हमारी history teacher थी स्कूल में और अभी स्कूल की principal बन गई है और she made the subject interesting for us. और जो लोग कहते हैं ना history is a dead subject about people who died a long time ago, she made that subject come alive. और सिर्फ उनकी वजह से मैं history as a university student भी करना चाहती थी. And then political science, I did that as my master's degree. In terms of activities, my favorite thing to do even today is to have a scintillating conversation with somebody, to sit and across a room, across a table from someone, get to know them, get to learn from them, reading books, of course, watching TV, playing badminton, because I do enjoy sports, and going on treks. I like to be in the outdoors. ओके, इसके साथ साथ फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है और आपके सोशल मीडिया की बात करें तो आपके काफ़ी सारे उस पर फिटनेस रिलेटेड वीडियोस होते हैं, सो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? Fitness and health is very important for me. और बचपन से, maybe because I come from a family where there's sports and athletes in the family, कुछ ना कुछ स्पोर्ट तो हम खेलते थे, टेनिस, बैडमिंटन, मैं स्कूल के हर स्पोर्ट्स की टीम में थी. I have done, as I said, cardio activities, fitness, high intensity workouts, dance workouts. I think whatever makes you sweat, whatever makes your heart beat fast, those are important to do. And my daughter does gymnastics, Kunal goes to the gym, I work out. I think as a family, we just really appreciate our health, and we see how it helps us to just be happy and content in life. And especially since we've all come out of a pandemic and we're all dealing with influenzas and COVID is on the rise again, I think having a good immune system, having a balanced diet and good nutrition, sleeping well, and exercising are really fundamentals that everyone should be doing. थैंक यू सो मच सोहा, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने के लिए. लास्टली ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? ऑडियंस में के साथ सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि एज अ ब्रांड एडवोकेट फ्रॉम इंडिया फॉर एजुकेशन न्यू जीलैंड, इफ़ यू आर अ यंग स्टूडेंट or if you have a young child who is looking to study abroad, do explore New Zealand as an option. Their borders are now open, and it is one of the most beautiful places that you can experience as a student with world-class education, and you won't regret it.